पहले ये जान लेते हैं कि आज का सुपर शेयर कौन सा है। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुनी गई है वो सेरामिक स्पेस से है, ओरिएंट बेल सेरामिक्स को चुना है। इसके नंबर्स आए थे, हाल में ही नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी साउंड थे। मुनाफा करीब करीब दोगुना हुआ है लास्ट क्वार्टर के अंदर और मुनाफा अच्छा आया है। इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि कंपनी आय में कमी थी लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अपनी इनपुट कॉस्ट को इस तरह से मैनेज किया कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई और नीचे आता था कंपनी जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कंपनी ने डेट को पिछले 3 सालों में एक सब्सटैंशियल वे में रिड्यूस किया है। अगर आप कंपनी कैश सिचुएशन देखें तो स्टॉक प्राइस का 10% हिस्सा कैश के तौर पे कंपनी रखा है, यानी कि 17 रुपए के आसपास ही कंपनी कैश ईपीएस है। आमतौर पे इस तरह के कैश सिचुएशन कम देखने को मिलते हैं लेकिन कंपनी के पास एक अच्छी मात्रा में कैश है। इसका इस्तेमाल कंपनी पर्याप्त फॉर्म में डिविडेंड के तौर पर भी देती रहती है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कंपनी परफॉर्मेंस करीब 2% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के लास्ट क्वार्टर के अंदर इंप्रूव हुए हैं। बुक वैल्यू करीब है शेयर करीब 140 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू और उसी के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। और अहम चीज़ ये कि वैल्यू वाइज भी देखें तो 22 के मल्टीपल पे कंपनी कामकाज कर रही है, 8 रुपए की ईपीएस है, जबकि पूरा स्पेस 35 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो वैल्यू सेक्टर वाइज भी देखें तो एक अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ग्रोथ वाइज कंपनी के लिए जो प्रोजेक्शन दी जा रही है कि FY19 FY20 ऑनवर्ड्स करीब 12 रुपए के आसपास की ईपीएस होगी और उस हिसाब से देखिए तो वैल्यू वाइज देखें तो करीब करीब 7 से 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड भी बताई जा रही है। जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया जा रहा है उनके मानना उनके हिसाब से करीब 190 रुपए तक की 4 भी शेयर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सुमित, मुझे तो लग रहा था आज आप कोई वैलेंटाइन डे से जुड़ा स्टॉक देंगे लेकिन आपने ओरिएंट दे दिया। चलिए खैर, इस स्टॉक पर तो अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन क्या प्लान्स हैं आपके? मेहर कल छुट्टी ले चुके ऑलरेडी, प्लान्स कुछ हद तक एग्जीक्यूट हो की जरूरत चुके नहीं हैं। ना। आज तो उल्टा ऑफिस आना बनता ही था आपके लिए, तो छुट्टी लेने की जरूरत तो थी नहीं आज। लेकिन हाँ, मेरे डिनर मैक्सिमम और तो कुछ खास प्लान अभी तक है नहीं एज सच। ऑलराइट, चलिए खैर, स्टॉक आपने जो दिया है उस पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। थैंक्स सुमित, एंड आई होप यू प्लान सम नाइस गिफ्ट्स आल्सो, इसके साथ आप डिनर पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू मार्केट्स, ओरिएंट इस बीच देखिए करीब 6-6.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। एंड्रू, you know the problem with this market right now is two things. One is you have to be very stock specific, and second, you know, as far as upside on the index is concerned, it looks like it will be capped because you don't really have any one single sector which is looking capable enough at this point to pull up the index from where it already is. I completely agree. Valuations are very stretched. I think our market's really just moving up because global markets are strong. I think if you took that away, then you know, you see the Nifty a lot lower than we are today, because you know, whilst you know companies are limping back from demonetization, you know, it's not a V-shaped recovery, that's for sure. It's very kind of fragile. And of course, you know, if GST comes to be implemented on the 1st of July, that really does have the you know, that kind of worries me, because it could really kind of have another halt on the economy. So the kind of growth forecasts a lot of analysts are putting on for 20% growth this year, I just don't think is achievable. And you know, in my view, I think the markets at best can move sideways from here, and that's really, you know, because global markets are good. It's nothing to do with India, I don't think. जी हितेश, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो अर्निंग्स आई अब तक उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों पर स्पेसिफिकली आप पे कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्स आए उसमें कोई क्लैरिटी मिली नहीं कि एसेट क्वालिटी कंसर्न्स कब तक एज आउट होंगे, इसीलिए शायद कल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक 10% का डेंट भी देखा था। अभी आप कैसे रीड करते हैं इन अर्निंग्स को और आपके कमेंट्स क्या हैं इन दोनों शेयर्स पर? जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बैंकिंग स्पेस पे हम पॉजिटिव है, बट उसमें हम प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा हमारा रुझान है। अगर पीएसयू बैंक्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमारा जो रिकमेंडेशन लिस्ट में है एसबीआई और पीएनबी, ये 2 स्टॉक्स हमारे काफ़ी टाइम से रिकमेंडेशन लिस्ट में हैं। और एसबीआई के रिजल्ट नो डाउट थोड़े से इन लाइन टू बिलो एक्सपेक्टेशन रहे, बट एट द सेम टाइम
हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा एसबीआई बैंक पे अगर थोड़ा करेक्शन भी होता है तो, बिकॉज एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन में अगर बीओबी की बात ना करें फिलहाल, एसबीआई की बात करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पीओसी बैंक्स हमने देखा कि एसेट क्वालिटी की डिटोरिएशन में स्थिरता आ रही है, तो ऑफकोर्स रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा कन्विक्शन ऑल आउट पीओसी बैंक्स पे नहीं आ रहा है अभी भी। लेकिन पीएनबी और एसबीआई ये दो स्टॉक्स हमारा अभी पॉजिटिव जोन है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक जस्ट ऐड कि पिछले क्वार्टर यानी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें हमने थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स का भी देखा इनके पोर्टफोलियो के ऊपर, जो इनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज होते हैं, जो इस क्वार्टर में शायद हमें पोस्ट दी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने यील्ड्स में थोड़ी सी स्टैंडिंग देखी है उसके चलते शायद वो जो अदर इनकम फैक्टर है वो थोड़ा सा मिसिंग रहेगा। सो वो जो सपोर्ट है वो उनके रिजल्ट्स को वो नहीं मिलेगा। सो सेंटिमेंटली आई थिंक एक क्वार्टर शायद पीएसयू बैंक्स अंडर परफॉर्म करें, बट आई थिंक अगर कोई नज़रिया 12 महीने का रखता है तो एसबीआई एंड पीएनबी स्टिल हमारे बाय लिस्ट में है। Absolutely. Andrew, if we look at budget as a trigger, at least two spaces where we have seen clear impact, and in fact there could be some movement. One is obviously the affordable housing segment where we have seen the stocks moving, especially the stocks which are in that category. Second is the housing finance companies, or I would say largely NBFCs. Are you comfortable with valuations in these two pockets? In terms of the housing finance companies or NBFCs, as you said, I think valuations are still a bit stretched at the moment. So it's not a space I really want to kind of jump into. On the affordable housing, what I'm looking at, and I mentioned last time as well, is maybe I want to look at the real estate sector overall. Obviously the large caps, and there's only really one that you'd look at in the second half of the year, because if affordable housing can shore up the housing market going forward, then I think the kind of higher end of the market can start to sort of stabilize and help some of these companies get the cash flow back. So I'm a little bit more positive on real estate, but it's a bit of a dark horse. I'm not saying you buy it now, but I think it's a space which I look after. I say the biggest risk for me is GST for the economy, and I think I want to see how that plays out before getting overly kind of more kind of bullish on the Indian market at these valuations anyway. And I said the risk is that we could see another halt or shock to the system as we did with demonetization, but this will have more of a direct effect on trade within India, and that's that would be significant, I think. Also, Andrew, as demonetization pain is easing, we have seen consumer discretionary stocks returning to normalcy, and auto stocks have also performed well. Talking specifically about auto shares, which stocks you are liking? Because we have seen stocks like Maruti Suzuki and Eicher Motors performing well, and we have also seen you recommending stocks like Ramakrishna Forgings in past. So what are your top picks right now in auto and auto ancillary space if you are bullish? Again, valuations have run up a little bit. I'd probably look at the auto parts companies again, and I think what I'm trying to look at now for the auto space is also companies which are globally kind of exposed in terms of either having exports into say the US or Europe, or auto parts companies which have manufacturing there, because I think those will be the beneficiaries of global growth, and that's so it's the global kind of manufacturing companies which I think I would look for more in kind of auto component space at the moment, rather than just looking domestically. I mean, the companies you mentioned obviously have strong order books because they have some new products and the kind of new offerings are being well received by the marketplace. But I think going forward, to get the extra growth, you're going to have to look at global auto and auto component companies to get the full benefit of global growth. ऑलराइट, चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं मार्केट को भी। निफ्टी इस समय करीब 25 पॉइंट नीचे 8779 के लेवल पर है। इफ़ यू लुक एट द एडवांस डिक्लाइन, तो इसमें भी कोई ख़ास रुझान अब बढ़त की तरफ थोड़ा कम ही है। अब देखिए, जो गिरने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 850-900 के बीच है। बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 550 के आसपास देखने को मिल रही है। हितेश, आपने कहा था कि आप कंजम्पशन स्पेस पर काफ़ी बुलिश हैं। गोइंग बाय दैट लॉजिक, यहाँ पर जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं
स्पेशली FMCG स्पेस के, चाहे वो ITC हो, डाबर हो, HUL हो, इस पर इस समय आपका व्यू क्या है? जी, FMCG स्टॉक्स पे भी हम सिलेक्टिवली पॉजिटिव हैं। जैसे आपने ITC का जिक्र किया, तो अगर आप इस क्वार्टर के भी रिजल्ट देखें तो ITC के नंबर्स काफ़ी डिसेंट थे और बजट में भी कोई बहुत बड़ा एक्साइज का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया। और वैसे भी अगर कभी भी आप हिस्टोरिकली ITC का परफॉर्मेंस देख लें तो कभी भी एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट आता भी है बजट के अंदर, तो ITC इज़ वेरी ईजिली एबल टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, हमने थोड़ा पिछले कुछ क्वार्टर से उसके वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर स्लो डाउन देखा है, बट आई थिंक एट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूरा FMCG पैक देखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो ITC इज़ अ वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट करंट लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर FMCG स्पेस की हम ओवरऑल बात करें, सो थोड़ा सा इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन ने देखा है, स्पेशली कंपनीज विच आर रूरल फोकस्ड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट FMCG स्पेस पे ब्रॉडली हमारा पॉजिटिव व्यू है। चाहे आप ब्रिटानिया की बात कर लें, चाहे आप कल भी ब्रिटानिया के नतीजे आए जो काफ़ी डिसेंट थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के वीज़ा भी काफ़ी अच्छे नतीजे दिए उन्होंने। तो यहाँ से ब्रिटानिया में आराम से 15 से 20% का अपसाइड हमें दिख रहा है अगर कोई निवेशक 9 से 12 महीने का व्यू लेते हैं। सो इस तरह से सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। मार्केट ऑलरेडी 8800 के लेवल पर है, सो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ रहा है। Also, Andrew, what's your view on FIs flows? Because we are getting some buy signals from FIs over last few days. FIs have been intermittent buyers, though there is no secure trend. In case FIs flows continues, can we expect a next leg of up move in Indian markets? I think the FII flow is not really because everyone's thinking India is an attractively valued market. I think what you're seeing is that you're getting flows into emerging market funds, and most of those funds are being allocated towards the Koreas and Taiwans, where they're a kind of a warrant on worldwide growth. And as I said before, if we're going to have global growth, then India, I think, is at the back end of FII kind of allocations. But because you get allocations into emerging markets, then obviously India will take a weightage of that. So I think it's more passive than it is people saying that India is attractive compared to other emerging markets at this point. All right. इस बीच एक पॉकेट हितेश जिसमें हमने अच्छा खासा एक्शन देखा है, एंड आई थिंक द मोर न्यूज़ विल फॉलो, वो है लॉजिस्टिक्स का। एंड एज वी प्रिपेयर फॉर GST विच कुड बी मे बी 3-4 months फ्रॉम नाउ, आप वैल्यूएशंस और एक्सटेंड होती देख रहे हैं क्या यहाँ पर? जी देखिए, एक इसमें काफ़ी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफ़ी बिल्डअप हुआ था प्राइमरीली GST के इम्प्लीमेंटेशन के चलते, बट हमने देखा ऑलरेडी GST का इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक जुलाई तक पोस्टपोन हो गया है। प्लस GST के ऊपर भी अभी अगर हम बोले तो 100% क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और उसके बाद भी कंपनीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इसलिए उसके चलते भी हमने देखा कि स्टॉक के रिएक्शन जो स्टॉक में थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ, और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखें तो उस तरह से कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्योरली ऑन GST इम्प्लीमेंटेशन बेसिस या GST के चलते हम लॉजिस्टिक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई निवेशक करेगा भी इन्वेस्टमेंट तो उसको 2-3 साल का व्यू रखना पड़ेगा। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने में, तो हमें कुछ बहुत बड़ा अपसेट दिख नहीं रहा है लॉजिस्टिक स्टॉक्स में। जी, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। अच्छा मूव है आज स्टॉक में और करीब 1% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एंड्रयू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेलीकॉम स्पेस इन द वेक ऑफ ऑल दैट टॉक अबाउट वोडाफोन एंड आइडिया coming together? And also, what's your view on Reliance Industries also, where the stock price we think is still not factoring the upside to earnings that may come in through Reliance Jio? So I think the telecom sector, I mean, apart from this noise around the potential merger, which caused a bit of excitement, the results tell you everything that you need to know. There's a lot of pain out there. There's going to be a lot more pain to continue. So whilst it's a nice sideshow in terms of excitement and in terms of a merge between two companies, the pain's not going to go away from the sector, and it's going to take another year before that pain goes away. So I just don't think we need to be in the telecom sector at all.
It's the only kind of, there's going to be no more consolidation around this. So I would just stay away. And of course, for Reliance Industries, a lot of sentiment will flow towards the stock because of that. So they'll probably keep it in check for the time being until we can see a really kind of clear road for profitability for these companies, and it's looking a long way off for me. इस बीच निफ्टी ऑलमोस्ट 22 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है. सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट नीचे है. बीपीसीएल 2.5% नीचे है. हीरो मोटोकॉप, अंबुजा सीमेंट्स, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है. एंड्रू, बिटवीन टाटा मोटर्स एंड मारुति, if if someone doesn't have it in their portfolio at this point, which stock looks more attractive to you? So as I said before, in terms of the auto sector, I would looking for those companies with global exposure, and obviously Tata Motors, fits the bill. Whether it's exports into or manufacturing into Europe, China, and the US, it's obviously got a very, very strong base to build, particularly with the Jaguar brand. So I would be more kind of focused towards these types of companies. So Tata Motors for me would be the one that I would look more favourably at the moment.